Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain exercise 3.3 of class 3rd mathematics. But first we will discuss an example related to this exercise, then we will back to the exercise. So first start example. Here example number 4 on page number 42. So everyone look here. Given that take away 178 from 536, means subtract 178 from 536. First of all, arrange these two numbers as a column wise arrangement. Okay, now 5 3 6 and 178. Clear? Now if we want to subtract 8 from C, so it is not possible. Why? Because 8 is greater than C, so we can't subtract 8 from C. So first of all, take 1 from 3, borrow 1 from 3. So if we borrow 1 from 3, 3 change into 2 and 6 change into 16. Okay, 10 increase. 6 क्या हो जाएगा, 10 increase हो जाएगा. So 6 change into 16. Now 16 minus 8 is equal to 8. Now here ये कितना हो गया था, 2 हो गया था ना. Now if we want to subtract 7 from 2, so it is not possible. Again borrow 1 from 5. If we take 1 from 5, it will be changed in the form of 4 and 2 change in the 12. So 12 minus 7 is equal to 5 and 4 minus 1 is equal to 3. तो अब ये देखिएगा कि जब एक बोरो कर लिया जाएगा यहाँ से, तो ये नंबर चेंज हो जाएगा. तो जो चेंज वाला नंबर है उसी में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है. क्लियर? क्या किया गया फिर से देख लेते हैं. सबसे पहला काम, अगर हमको 8 माइनस करना हो 6 में से तो वो पॉसिबल नहीं क्योंकि 8 ग्रेटर था. तो यहाँ से एक बोरो करेंगे, ये 16 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा. 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8. नाउ अब 2 माइनस 7 कर दे तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था. तो यहाँ से फिर से एक बोरो करेंगे तो ये 12 हो जाएगा. 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, मीन्स 358 एज ए आंसर. नाउ स्टार्ट exercise 3.3 from first question. Look here, it is your first question, first part A. Subtract 195 from 352. If we want to subtract unit place digit, means if we want to subtract 5 from 2, so it is not possible. Why? Because 5 is greater than 2. So first of all, take 1 from 5. If we take 1 from 5, it will be changed into 4. ओके एंड 2 चेंज इंटू 12. 10 इंक्रीज हो जाएगा ना. 1 10 इज इक्वल टू 10 1s. सो 2 चेंज इंटू 12. नाउ 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7. नाउ हियर 4 एंड 9. इफ वी वांट टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4, सो वी कांट डू इट. सो टेक 1 फ्रॉम 3, सो इट विल बी चेंज इंटू 2 एंड 4 चेंज इंटू 14. क्लियर? 10 इंक्रीज हो जाएगा. Now 14 minus 9 is equal to 5. 2 minus 1 is equal to 1. Means 157 as a answer. क्या किया? सबसे पहला काम, ये नंबर स्मॉलर है तो 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था. हमने क्या किया, एक बोरो किया 5 से, तो 5 चेंज हो गया 4 में और 2 चेंज हो गया 2 इंक्रीज बाई 10. सो व्हेन वी ऐड 10 बाई 2 वी गेट 12. सो 2 चेंज इंटू 12. नाउ 12 माइनस 5 is equal to 7. Again if we subtract 9 from 4, so we can't do it. So take 1 from 100 place, so 4 change into 14. 14 minus 9 5, and if 3 give 1 here, it will be changed in the form of 2. So 2 minus 1 is equal to 1 as a answer. Clear? One more question, part B. Same as 188. Subtract 188 from 426. So compare the unit digit. It's 6 and 8. So we can't subtract 8 from 6. Take 1 from 10th place. It will be changed into 1 and 6 into 16. Now 16 minus 8. We get 8 here. Now 1 and 8. Again 1 is smaller than 8, so take 1 from here, it change into 3 and 1 change into 11, increase by 10. So 1 में 10 ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा. नाउ 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3 एंड 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2. क्लियर? इसी तरीके से
क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए एक क्वेश्चन और लगाते हैं। सेक्शन सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके के लगेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं एल हियर एज ए पोर्शन एल। लुक हियर, 98 subtract 98 from 987. Again at ones place here 7 and 8, so we can't subtract 8 from 7. Take 1 from 10 place, so it will be changed in the form of 7 and 7 change into 17. Clear? Now 17 minus 8 is equal to 9 and 7 minus 9 we can't do it. So take 1 from here 8 and 7 change into 17. Clear? 17 minus 9 is equal to 8 and 8 means 889 as the answer. Clear? Okay. Similarly solved M, N, O, P, Q, R, S and T part of question number 1 in your book. After completing your work, you can send me your answer on my WhatsApp number. Now I am going to explain question number 2. Write in columns and subtract, means first write the number like this and then we subtract it. Second question, first part, 952 minus 867. First of all write the question. Okay, it is your second question, first part, 952 minus 867. First of all write the question in column, means we can write like this: 9, 5, 2, 8, 6 and 7. Clear? Now if we want to subtract 867 minus from 952, first subtract the unit digit. So we can't subtract 7 from 2, so take 1 from 10 place. So it will be changed in 4 and 2 change in 12. Clear? Now 12 minus 7 as a 5. Clear? Now again 6 can't subtract from 4, so borrow 1 from here, it will be changed in the form of 8 and 4 change in 14. Clear? Okay. Now 14 minus 6 is equal to 8 and 8 minus 8 is equal to 0, so no need to write here 0, means 85 as a answer. Is it clear to everyone? Okay. Now second part of question number 2. Now second question, subtract 97 from 586. First of all write the question as a column wise. 586 minus 97, so we can write like this: 5, 8, 6, 7, 9 and minus. एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑलवेज राइट यूनिट डिजिट एट ए यूनिट प्लेस, टेंस डिजिट एट टेंस प्लेस एंड 100 डिजिट एज ए 100 प्लेस। ऐसे मत लिख दीजिएगा कि यहाँ पे 9 आ जाए, यहाँ पे 797 ऐसे लिख दीजिए, नहीं, ये यूनिट है तो यूनिट प्लेस डिजिट पे आएगा, वंस प्लेस डिजिट पे आएगा। ये टेंस डिजिट है तो राइट एट द टेंस प्लेस एंड ये 5 है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो कोई मतलब नहीं उसका। नाउ सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 6, so it is smaller compared to 7, so we can't subtract 7 from 6, so borrow 1 from here, it will be changed in the form of 7. ये क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा ना, ओके, ये 7 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? 16. नाउ सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 16, 16 minus 7 is equal to 9, okay, and 7 minus 9, again take 1 from here, it will be changed in 4 and 7 change into 17.
17 minus 9 is equal to 8 and 4 as a answer, means 489 as a आंसर। क्लियर? तो सिर्फ इसमें ये ध्यान देना है कि आपको इसको अरेंज किस तरीके से करना है, बाकी सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस वही है जो सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया है। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं इसी सेकंड क्वेश्चन से। इट इज़ योर पार्ट जी, 715 माइनस 96, अरेंज अकॉर्डिंग टू कॉलम वाइज 7 1 5 and write here unit as a unit place digit and tens at the tens place digit. Now subtract these two numbers. So we can't subtract 6 from 5, so take 1, it will be changed into 15 and 1 change into 0. Clear? 15 minus 6 9. Again if we want to ये 1 है, ठीक है ना, ये चेंज हो गया। ओके, if we want to subtract 9 from 0, so we can't do it, so take 1 from here, it change into 6 and 0 change into 10. 0 plus 10 is equal to 10. Now 10 minus 9 1 and 6, so 619 as a answer. Clear? Now same as try to solve all the part of question number 1 and question number 2 also. Solve question number 1 in your book and question number 2 in your classwork copy. Solve all the question and click the photograph and send to me on my WhatsApp number. In case of any doubt, you may ask me on my WhatsApp number. Otherwise, you can discuss in live class. Thank you everyone. Goodbye.